everyone, welcome to iExamB and embrace the iExamB learning experience. Students, do remember to subscribe to our channel and press on the bell icon so that you can stay tuned and stay updated. Also, in case if you have any questions, queries, or you want to clarify any of your doubts, you can connect us through the email ID or the phone number which is displayed on the screen, and we are there to help you out with your preparation. So in case if you are preparing for any of the competitive law exams, do remember to watch this video, as in this particular video I'll be discussing about the ways which you can adopt to tackle the complex and lengthy legal topics that come in the competitive law exams. So अगर आप किसी भी competitive law exam का preparation कर रहे हो तो आप aware होंगे that there are certain subjects, law topics which are complex also and lengthy also. So you have to be aware of the strategies, the ways how you can tackle those complex and lengthy topics from your exam point of view. तो आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ. I'll be helping you out with the right approach and I'll be guiding you through the key strategies so that you can break down the legal topics which are complex and lengthy and you can boost your performance. So this video is all about that. Now moving ahead with our discussion. So the very first thing you have to do is that you have to understand the MCQ pattern. जो भी competitive law exams होते हैं, mostly they are MCQ pattern, ठीक है? That is multiple choice questions or you can say objective type questions. तो आपको जब start करना है अपना preparation, तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि you are understanding the MCQ pattern, okay? So MCQ pattern जो है, that is basically testing your knowledge on say specific facts, definitions या फिर key provisions. इन चीजों को MCQ pattern of questions जो है टेस्ट करता है. That is very important, and so your goal is to focus on what is basically very important that is likely to be asked in the exam. ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि key concepts आपसे पूछे जा सकते हैं. करेक्ट, जो भी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उनमें से जो भी की कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्ट्राइन्स हैं जो कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो पूछे जा सकते हैं. देन यू कैन से द लैंडमार्क केसेस. मेनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव लॉ एग्जाम्स उसमें जो है आपको क्वेश्चंस जो हैं लैंडमार्क केसेस से भी पूछे जा सकते हैं. जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं, केसेस हैं, उनको टेस्ट किया जा सकता है एमसीक्यू फॉर्म में भी. एंड लास्टली the important provisions which is very crucial basically, ठीक है? So the very important sections, articles, you can say from the various acts and laws, they can be tested. So you have to focus on those which are very crucial, which are very frequently to be tested in the exam. Now for example, you can take this particular question which is from the Constitution of इंडिया, ठीक है? सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो जब भी आप पढ़ रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग इट वुड बी एनी ऑफ द लॉ सब्जेक्ट्स. सो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, अब ये क्वेश्चन डील कर रहा है कि ये सारे जो ऑप्शंस है इनमें से फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ दीज इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. Right to property, right to freedom of speech, right to work, right to vote. And if you are thinking the correct answer is option B, you are right. Right to freedom of speech is a fundamental right. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि fundamental rights होता कहाँ है, which part of the constitution it is basically being talked about. Then right to freedom of speech जो है उसमें किस part में है या किस article में particularly है, ठीक है? That is making it a fundamental right. All those aspects you have to be very clear. अब अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो आप अगर फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़े हो, किस किस पार्ट में प्रोविजन है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है, यू विल बी वेरी क्लियर दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एनी मोर. ठीक है, क्योंकि थ्रू एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस वॉज रिमूव्ड एज अ फंडामेंटल राइट एंड नाउ दिस इज ओनली अ लीगल राइट. देन राइट टू वर्क. राइट टू वर्क जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड सो इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट. एंड लास्टली द राइट टू vote. Again, it's a statutory right. So this particular question is illustrating, basically telling you how you should go ahead and understand the classification of say the various fundamental rights that are there in the constitution, which is very essential for answering the questions which come up in the exam in a correct manner.
सो मास्टरिंग सच बेसिक इज योर फर्स्ट स्टेप. तो सबसे पहला चीज क्या है, आपको अंडरस्टैंड करना है एमसीक्यू पैटर्न, सो दैट व्हाट ऑल थिंग्स इट इज टेस्टिंग, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू फोकस ऑन, सो दैट यू कैन मास्टर ऑन द basics, which will be your first step as I mentioned. Then we have to break down the complex legal topics. जो भी complex legal topics हैं, you have to go ahead and you have to break down. ठीक है, so that you can avoid the feeling of overwhelmness. You can say it is very important that you break the larger topics into the smaller sections. So as I mentioned, breaking the larger topics into the smaller manageable sections so that you can concentrate on key provisions in an effective manner, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोविजन है, आप उसको एक बार में पढ़ोगे, यू विल बी गेटिंग ओवरवेल्म्ड ऑल्सो, यू विल बी नॉट एबल टू मैनेज दैट. सो टू अवॉइड ऑल दीज एंड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द की प्रोविजंस इफेक्टिवली, यू हैव टू ब्रेक दोज लार्जर टॉपिक्स. ओके, सो आपको एक डाइजेस्टेबल पार्ट्स में उसको ब्रेक डाउन करना है ताकि आप फोकस कर सको इन अ प्रॉपर मैनर. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग. देन आइडेंटिफाइंग ऑफ द कोर थीम्स. ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं कि आपको मैनेजेबल सेक्शंस में उसको ब्रेक डाउन करना है, सो व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कोर थीम्स, यू कैन सी. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड एंड जंपिंग से डायरेक्टली और स्ट्रेट इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ द आर्टिकल्स, जैसे अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अगर हम उसका एग्जाम्पल लें तो ईच आर्टिकल्स के डिटेल्स में आप जाके पढ़ो, उसके पहले आपको इंश्योर करना है कि यू आर आइडेंटिफाइंग द थीम. से ग्रुपिंग ऑफ द रिलेटेड प्रोविजंस, जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया, आपका राइट टू फ्रीडम हो गया, तो उनको आप पर्सनल लिबर्टीज के अंदर ग्रुप कर सकते हो. तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कोर थीम्स. आप एक विजुअल्स क्रिएट कर सकते हो दैट विल हेल्प यू टू बेसिकली स्टडी इन अ मोर इफेक्टिव मैनर. तो आप माइंड मैप्स को यूज कर सकते हो, चार्ट्स को यूज कर सकते हो, वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा जो कि रिलेशनशिप जो है बता सकता है आपको डिफरेंट राइट्स के बीच में. अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करी थी, इसलिए आई एम टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इट कुड बी कंपनीज एक्ट, इट कुड बी एनी ऑफ द क्रिमिनल लॉज, इट कुड बी सिक्योरिटीज लॉ, इट कुड बी कॉन्ट्रैक्ट लॉज, any laws you are studying, you have to ensure that these are the things you have to focus on. हाँ, बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनीज एक्ट, ये सब में ये ज्यादा आपको हेल्प करेगा क्योंकि ये लेंदी यू कैन से लीगल सब्जेक्ट्स हैं, एक्ट्स हैं. ठीक है, सो आपको विजुअल क्रिएट कर सकते हो आप, जैसा मैंने मेंशन किया, माइंड मैप्स, चार्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, देन यू कैन यूज लेयर्ड लर्निंग. अब लेयर्ड लर्निंग की अगर मैं बात कर रही हूँ, व्हाट इज लेयर्ड लर्निंग? लेयर्ड लर्निंग बेसिकली मींस कि यू हैव टू गो अहेड एंड स्टार्ट विद एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक. है टॉपिक का ओवरव्यू आपको होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, एंड देन यू नीड टू ग्रेजुअली एड लेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यू कैन से. ठीक है, सो पहले आपको फोकस करना होगा बेसिक राइट्स पे, से उनके जनरल प्रिंसिपल्स पे, एंड देन यू हैव टू मूव अहेड विद द एक्सेप्शंस, रिस्ट्रिक्शंस अगर कोई उन पे प्लेस्ड है. ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि आर्टिकल 19 में देयर इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, सो देन यू हैव टू मूव अहेड विद दैट. देन यू हैव टू चंक द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू डिवाइड ईच फंडामेंटल राइट से इनटू स्मॉलर सब टॉपिक्स में आप उसको डिवाइड कर दो. अब राइट टू इक्वालिटी है तो उसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ऑल दोज थिंग्स यू कैन गो अहेड एंड डू. सो जितना बड़ा इंफॉर्मेशन है, जितना आप उसको मैनेजेबल सेक्शंस में ब्रेक डाउन करोगे, प्रोविजंस में ब्रेक डाउन करोगे, उतना आपको हेल्पफुल होगा. सो दैट यू हैव टू डू. सी द फंडामेंटल राइट्स, अभी कॉन्स्टिट्यूशन का इसलिए बात करी हूँ, लेंदी भी है, इंपॉर्टेंट भी है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो फंडामेंटल राइट्स को जो है हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 14 में, 21 में, एंड देन वी कैन गो अहेड एंड स्टडी इट. सो इट इज मेकिंग फॉर अस इजियर टू टैकल द क्वेश्चंस ऑन ईच ऑफ दीज राइट्स स्पेसिफिकली. ओके, बिकॉज fundamental rights is anyways an important topic. Then you can similarly, अगर companies act again lengthy है, बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स को, हाउ टू स्टडी द कंपनीज एक्ट. सो कंपनीज एक्ट में से प्रोस्पेक्टस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका अगर हम एग्जांपल लें, सो यू कैन ब्रेक डाउन व्हाट इज प्रोस्पेक्टस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, देन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस, देन द टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो अलग अलग उसमें सेक्शंस हैं, यू कैन स्टडी लाइक दिस. देन लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट्स एंड ऑल अंडर सेक्शन 34. सो आप पूरा प्रोस्पेक्टस ओवरऑल नहीं पढ़ के इसको अगर ये सब पार्ट्स में डिवाइड करके एंड देन यू आर स्टडीइंग इट, और से द सब पार्ट्स का भी आप पार्ट डिवाइड कर सकते हो, टाइप्स में ही 3-4 है, यू कैन गो अहेड विद ईच ऑफ देम एट अ टाइम. तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा. और आप एक और काम कर सकते हो कि साथ ही साथ आप
MCQs को भी कुछ MCQs को सॉल्व कर सकती हो बिफोर यू गो हेड ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो ये हेल्प करेगा आपको रीइंफोर्स करने में वॉट एवर अंडरस्टैंडिंग यू हैव हैड विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक और कॉन्सेप्ट before you go ahead and move on to the say next chunk of information or section you have thought of doing. So इससे क्या होने वाला है, again I'm repeating, by applying this particular technique you can turn a very larger say complex topic which you have to study into smaller one. more focused हो जाएगा क्योंकि वो आपने एक chunk size में bit size में उसको break down कर दिया है. It is making for you easier to understand, memorize जो करना होगा provisions वहां पे वो भी easy हो जाएगा and apply कर सकोगे आप उसको in a better way in the exam. ठीक है, तो इस तरीके से होगा and this method will be breaking down the contents in a strategic way जो कि बहुत important है competitive law exam के preparation में. और आपको साथ ही साथ किस चीज का help करेगा कि आप जो है देख सकोगे जो भी कनेक्शंस है रिलेटेड प्रोविजंस के बीच में आपको एनहांस करेगा कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन दोनों. तो दैट इज व्हाई दिस इज ब्रेकिंग डाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद the further thing you have to do is to focus on the key legal provisions. Okay, so as we discussed what all MCQs focus and all, so MCQ आपका test करेगा understanding of the special provisions and sections. Okay, and so you have to focus on the most relevant and frequently tested parts of the topic. Say again constitution का example अगर हम ले तो you have to focus on articles 14 to 32 which is talking about the fundamental rights जो कि बहुत important है. ठीक है, again कंपनीज आपका ले लो आप तो प्रोस्पेक्टस, शेयर होल्डर्स के मीटिंग्स एंड ऑल दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो यू हैव टू फोकस ऑन द की प्रोविजंस, ओके, व्हिच ऑल आर ऑफन टेस्टेड इन द exam and are being asked in the exam. Now this is very important, use of mnemonics and short notes. ठीक है, ये एक powerful tool है for quick revision या quick recall के लिए. ठीक है, now say fundamental rights है. fundamental rights को याद रखने के लिए आप एक mnemonics create कर सकते हो which is every fox enjoys racing cats rapidly. E stands for equality, then you have F stands for freedom, then E stands for exploitation, then R for religion, C for cultural and educational, and R for remedies. So every fox enjoys racing cats rapidly. Something easy manner you can retain, and by that you are going to retain or recall the fundamental rights in an easy way. Okay, so these type you can create. This is just an example. Okay, same way you can see for the Companies Act. Say if we are talking about the prospectus, rich people save all diamonds. Okay, so R is for the red herring prospectus, then we have P for the prospectus in general, what it is and all, S for shelf prospectus, A for abridged prospectus, and D for deemed prospectus. So this mnemonics, if you create, it is helping you to retain those provision in a simple manner. Okay, so you can use acronyms, you can use mnemonics to recall all the essentials with respect to any of the important provisions. So this is again a very important step which when you are studying you have to go ahead and at the same time you have to do it. ये नहीं कि उसको आप बाद में करोगे, later on के लिए आप रख दो. Then we have the practice MCQs, manage time and staying confident. These are very important, you can say, of all the things which you will be doing for tackling the complex topics for your competitive law exams. ठीक है, so regular practice क्यों करना है, क्योंकि वो आपके confidence को boost करेगा and आपको familiar बनाएगा exam format से. So you have to go ahead and do that. You have to go through the past papers if available or online quizzes and all, so that you can stimulate the real exam conditions. That is very important for preparing for any of the competitive law exams. Then time yourself is very important, and इसका मतलब है कि आपको practice करना है एक time pressure के अंदर ताकि आप improve कर सको अपने speed और accuracy को, which is again very important. Okay, then you don't have to dwell on one question only. You have to move on if you are unsure of any of the questions. You can revisit it later if possible, but don't dwell on only one question. Don't do that. That is again important. Then you have to trust your preparation. So your approach for each question should be in a calm and confident manner, and you have to trust that whatever you have studied, you have prepared till date, you have done your best, and you can answer any of the questions which is coming up. Then you have to have clarity and consistency.
क्योंकि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस अगर आप करोगे दैट विल हेल्प यू टू बी प्रिपेयर्ड टू टैकल यू कैन से even the toughest of the toughest MCQs. So clarity and consistency in your preparation is very important. You cannot miss on to these aspects. Okay, so that is again important. Now talking about the key takeaways, okay, from the discussion we had in this particular video, what are the very important aspects or key takeaways? You have to understand the MCQ pattern. What you have to understand with the MCQ pattern, that they often test the definitions, the provisions, the key concepts, and focus on the frequently tested concepts. Then you have to break down the complex topics. You can use outlines, you can use mind maps, you can use flow charts, you can break the topics into smaller sections or subtopics for your better focus and retention. Then you have to prioritize key provisions, okay, key provisions or landmark cases which actually comes in the exams at times. So you can pay attention to the critical provisions, important provisions. The next is mnemonics and short notes. Okay, you can use memory aids. These are basically nothing but the memory aids जो कि आपको help करेगा recall करने में important information को quickly. Okay, so you can go ahead with the mnemonics and short notes, very important. Then you have to practice MCQs and manage time. That is very important. Why? Because if you are regularly practicing MCQs, that will be stimulating the exam condition, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, ठीक है, and that will obviously help you to improve your speed and accuracy, जो कि बहुत important है किसी भी exam preparation के लिए, especially if we are talking about the competitive law exams. So I hope this video helps you to prepare for your exam in a better way. So with this we come to an end of our discussion for today. You can subscribe to our channel and press on the bell icon so that you can stay tuned and stay updated and make your preparation 50% faster with us at our exam.